In case you won't hear my voice when I come back, please remind him. Okay, guys, I just started the stream, but I have some things to do, so I'll join back in 10-20 minutes. Till then, enjoy. Aaron is here, so he'll respond to your questions. Yeah. And I'm okay, Aaron, I'm going, okay? Yeah.
Hello. Yeah, I can hear you. Yeah. And I need to turn on the camera. Yes, I'm back. I had to do some, household stuff, nothing much. I'm back now. Yeah, that's good. No, on your stream, camera is not there. Oh, I just turned it on. It'll take some seconds, man. Yeah, it takes. Okay. Yeah. Oh, yeah. There you go. Let's go. So what happened? Nothing happened basically. I'm waiting. I'm waiting gold for to drop around pivot area so I can buy for, buy for some swing. There's no major news. I don't think so. There's no major news today. Yeah, so the 7 o'clock and let's just wait and watch how it goes. So I'm not planning to sell even if it gold drop towards maybe 37.00. I have no intention to sell gold. Only position I'll be drain buys. Yeah. Anna? No, even me actually. Without trend, कुछ ज़्यादा अच्छी report है नहीं, है ना? Against trend basically. Yeah, against trend, it's a suicide going against trend actually. Why will you lose your money randomly? Okay, so this is the current zone. Maybe let me reduce it to this. So this is the current zone. If we somehow close below this one, then there is a chance we might go to our 99. Then we can even. It's a good range. उसके बाद अपने पास EU है. EU is running gold 35 pips. Should I close more or trail my SL? Let me see. I have already trailed my SL on. EU and if I so let's do one thing. Let's move this SL to 4-hour lows now. Last 4-hour candle low. Okay. EU का सेम स्टोरी है जो EU का था, but we only entry on. We are not ended in. Yeah. और अब इसके बाद एक पेयर I think I found one more promising trade or something. I think that was GU, I guess. Sorry, not GU. Yes, UJ. Look at UJ. So UJ अपने पास इस रेंज के अंदर है, ये वाली रेंज, है? And we do have a next range here. Although ये कुछ ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, it's hardly around. Oh, 24 waves. Never mind, guys. No need to fry our brain for 20 pips. Because क्योंकि ये भी ढंग से ब्रेकआउट हुआ नहीं है. नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट जो भी होगा, जैसे ब्रेकआउट यहाँ तक कुछ होता है ना, कुछ रेड कैंडल and then not enough for range left उसके बाद. So EU bye bye, sorry UJ bye bye. Then we have EU left. EU के अंदर ये सीन है, EU and GU both pair. जो सुबह की जो ट्रेन चल रही है ना अपनी, तो इस रनिंग गोल्ड अभी कितना 30 कुछ शायद है ना. एंड इसके बाद अगर EU इसके ऊपर क्लोज देता है अपने को अबव 92, देन अपने पास क्लीन रेंज है EU का टिल 39. तो ये रेंज है एटलीस्ट 47 पिप. तो एक ट्रेड यहाँ ली जा सकती है, ये वाला एरिया. उसके बाद अपने पास GU आता है. GU के अंदर भी सेम थिंग है. इन केस ये मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार ताकि कन्फ्यूजन नहीं. GU का ये रेंज फिल हो चुका है ऑलरेडी. अगर हाँ आप GU इसके ऊपर क्लोज कर देता है अपने को बिलो 13-14, तो अपने पास एक रेंज है यहाँ तक. एंड कुछ TP पर यहाँ लॉक कर लेंगे टू बी सेफर साइड. तो ये रेंज है अपने पास सेम 47 रुपये रेंज दोनों पेयर के अंदर. तो EU का भी सेम सीन है, GU का भी सेम सीन है. एंड गोल्ड tapped another 15-minute order block and then started giving reaction. My earlier entry from the 15-minute order block is still running. I thought it would take my break even, but it did not. So I'm happy. It's a good day going on. Even this 4K FUG gave some nice reaction. See, ये initial drop के बाद 4K FUG के 120, फिर जो hourly order look था, that gave some 70-80 pips. But again,
कोई ट्रेड रश करने की नीड है, कोई प्रोमिसिंग ट्रेड मिल नहीं रही जिसके अंदर कुछ वर्कवाइल और इस करना। हाँ No, इतना the 15-minute order block you mentioned about the 1 hour order block. I saw a 30-minute order block and a 15-minute order block, and it does come in favor 61.8% and 70%. So I got two confirmations over there. I took a trade. It did actually scared for a good while, but then immediately started giving profit. After half an hour, it gave huge profits. So I was like, fine. What is the SL for EU? एक सेकेंड बच्ची, SL for EU। EU के SL ट्रेन किया अपन ने तो 4 घंटे के लो के ऊपर है अभी तो। Maybe you can put what's the low of this candle is 618. Put 61, 17.61. Okay, मैंने मार्क नहीं किया इसको। Sorry. Let me update this in what do you call it? Telegram. Telegram. Okay. And on Discord as well. एक स्टोरी ये भी हो सकती है ईयन के अंदर। If you live in this 4 hour, we do have this FVG right here. Yeah. It might come down, tap this FVG and then should have happens. But again, let's wait and watch. And we open over and we're looking for some potential increase with minimal risk. एक ट्रेड आइडिया इधर अपना अगर ब्रेकआउट होता तो वी हैव दिस ब्रेकआउट ट्रेड सेम ऑन EU एंड गोल्ड। लेट गोल्ड ड्रॉप अ बिट, अगर इस पे नीचे क्लोज होता है अपन सेल ट्राई कर सकते हैं जस्ट फॉर स्मॉल स्केल। बट ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम बाइस इज स्टिल बुलिश, तो अपन हाई टाइम फ्रेम बाइस बुलिश का सीन देख रहे हैं फॉर स्विंग ट्रेड, बट फॉर स्कैल्पिंग वी कैन डन 40-50 pips here and there. EU ने भाई मुश्किल से कितने पिप दिए अपने को? अरे मैं EU चल रहा हार्डली 25% profit. 24 pips actually. हाँ ना, I am वो- running 24 pips only. Gold randomly gave 100 pips here and there. No. Here and there without any doubt. The 15-minute order, like the buy was very nice actually. Because I was expecting it to go to 3728. Normal continuation of structure based on 15-minute. Let's see. Yeah. Yeah, but yeah, 1 hour there is no
proper retracement, so I do expect it to just come down till that हाँ daily or weekly pivot once. अरे वो भी नहीं, एटलीस्ट प्राइस का लास्ट जोन ये था अपना से, ये जो कैंडल है ना यहाँ पर कुछ हुआ है नहीं टेस्ट 68, वगैरह। right? हाँ ये 68 zone actually. हाँ ये स्टेट अप ब्रेकआउट है, इवन 98 इज फाइन। अगर 98 के ऊपर भी अपना आवरली के ऊपर 98 का रीटेस्ट हो जाए तो भी बेटर है। एंड देन आई थिंक वी डू हैव दिस ऑटो ब्लॉक Yeah, 98, sorry, not 68, 98, yeah. is better। 68 तो क्लासी है, you know, everything is there। 68, sorry, 68, my bad, I misspoke actually. Yeah, 98 is what even 98 is what I mentioned. For me also I kept it. And I expect it get जो ऊपर मतलब तो इसका भी कुछ kind of price can come down and If gap is getting filled, I think the 1 hour order block, there's a good chance that the 1 hour order block could be tapped. and look at this 4 hours. So 4 hours heavily bullish. This is slightly closely doji, and now buyers are losing some momentum right over here, and so maybe they come down first. They have some liquidity, and then should expect some The retracement. 75, yeah, the 75k FEG in that way makes sense. Vijay Bhuvana, if it close below resistance about 37, 12 and 15, I think should be the percent. तो विजय so हाँ अपना लास्ट सपोर्ट देखो यही है ना, करंटली लास्ट सपोर्ट यही है। हाँ अगर अपने को मिलता है बुलिश कुछ बेरिश क्लोजर यहाँ पे, तो अपने पास एक रेंज अच्छी खासी है, हम अपने पास 100 पे रेंज आराम से, तो आराम से स्टैंड हो सकता है 50 यहाँ तक। तो बस क्लोजर का वेट करो, हाँ ये हो सकता है। Oh, there's your damage. Makes sense. What about a takeout? Since gold is known to give fake outs. We'll check the volume, brother. बिना उसके नहीं जा रहे। Yes. I have to order some stuff again, so give me. It did not tap the 100% ADR. That few minutes, like, to be honest, I do have some. I do have some small position over there just to test it out. Position over there, just yeah, exactly. But I kept it at 29.5, just considering the spread and everything. Usually when by less than 10 pip. Usually when I take a trade on this ADR, I have 50 pip SL. That's it. If they're not reacting on 50 even pips, me actually, yeah, 50 pip of SL, and I close usually like I wait for 30 pip reaction, take partials 50 pip. Mostly I close the trade. yeah, that's it. थोड़ा reaction चाहिए बस, उसके बाद at least I can reduce my SL. Yeah, exactly. That's what even I'm looking for. ADR, like, but I think last week it was last week. I forgot. Last week I think so. ADR I just randomly 3700. It was perfect ADR, like a psychological level plus ADR is also there. I'm like, okay, yeah, let's go for it. And that dropped heavy actually. And again, I that dropped heavy, like 200-300 pips it dropped. But I closed it again. I closed it at 50 pips. Whatever you get, whatever you get, that's fine. And EU start to drop a bit. Same along with GU. And the gold. Oh, I'm happy that gold is dropping. ऐसा नहीं होता कि gold नहीं sell इसके नहीं चलेंगे अब हम। एक बार एंट्री मिल जाए अपने को, उसके बाद देखते हैं। So kilo to saying Arun's plan always work. So if my plans always work, bro, I'll be a millionaire. इश्यू तो वही होता है ना, वो एक टाइम पे जब प्लान काम नहीं करता वहाँ पे हम ओवर रिस्क करते हैं ना, दैट इज द कंसर्न। No. Sorry. I don't do that actually. I don't over risk on any of my trades. ओवर रिस्क से याद है विजय, क्या हाल है भाई? Yeah. Yeah, I don't take 2.5% risk on a single trade. नहीं विजय का एक बार कितना विजय का 3.7 था। विजय लाइक तुम पब्लिक बदनाम कर रहे हो मेरे को।
Pratik did mention a trade to me. It worked out perfectly, actually. Oh, okay, that's nice. वैसे सच में गलती थी क्या भाई? गलती तो नहीं थी, वो कुछ और था, वो पाप था वो। चैनल बना लेना चाहिए था अपने को यहाँ पे, something like this, and then we do have a breakout in retest and now strong. Oh, yeah. Even this was fine. No? If you start to trade from this area, like On 5 minute, it worked perfectly, actually. Like, Yeah, it- 5 minute chalk got created, and then it tested the FEG and then dropped. That's it. okay, enough for those would have, could have, should have. Let's just wait. Woulda, coulda, shoulda. That's always. Uh, Like, well- I'm just seeing it right now. I don't mind. Like, I was not looking for sell also, so it is not something which I would be. ट्रेड के जाने के बाद नहीं होता ना भाई यार, काश मेरे को इस ट्रेड के ऊपर ना प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, नहीं इस ट्रेड को मेरे को होल्ड करना चाहिए था। तो सेम स्टोरी है। Or the most common thing which I've heard is, oh, if I could just over-risk on this trade only, हाँ ना, I would have passed my account. Or if I could just hold this position for the full TP. Trust in my analysis. यार ये वो टाइम है जो बहुत बोरिंग टाइम है। अब जब कोई ट्रेड नहीं, इंसान करे क्या भाई? किसी के पास कोई सवाल है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज आई एम डूइंग फॉर दैट थिंग कॉल्ड चेस। Okay, fine. I'm ready. Please stop background music. Otherwise we'll get him. I am not hearing any background music, actually. अरे वो माइनर स्टार्ट किया था ना, बट मैंने क्लोज कर दिया। Okay. There is a chance that But then price, reduce the volume of the background music. That would be good, right? there's a chance that price keep on reacting from this area. So logically we do have a resistance. Now price creates support, it tapped again, it can react again, and then keep on ranging in this area. But we have only two areas to trade, either close below or go up, so we can take a trade. Until unless there is no point Yeah. in going into this range, you know. And इस area में अगर तुम सब if you decide इस area में trade कर दो, you have little resistance right here, then we have support right here, resistance right here, here, तो वो नहीं है. But there is a chance that price can keep on bouncing back and forth in this area. So something like this, like अभी यहाँ से ये हुआ, then it came down. Something like this, again it can go up.
I have no idea what Vijay actually mentioned. मुझे Distraction यार, some type of webs. distraction नहीं पसंद है between trading. इससे पहले I कोई have the perfect reply for this, but it would be too rude, I think. ठीक है यार, चलने दे, क्या चल. It's fine, bro. He stopped it. And it shouldn't be any other pairs. Maybe, oh, What about you, Jay? dude, I think this might work out. See, like BTC is stuck in this range. If we have a breakout, we can try to scalp in this range. In range. What's the story on left? Yeah, well, we can, yes, we can literally try out BTC. But BTC is running right here. The next range, you can not get plus base. And well, this I am, we can see right here. Brand I see this. Yeah. So, like this, we do have this. Wanna try Nas? Last one there, hold on. Okay. से पता नहीं कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम है भाई अभी. Maybe अगर ये रिट्रेस करने आता है then we can try. Yeah. पास ऑल टाइम हाई चल रहा है यार. About to. Zero is all time high running already. And from 7th April 25, we hit the bottom, and from there just we are just going up. See, now start at 16,000. And we are 24,000 now. I think the NFP 18th, 17th September, something happened. GJ के पास भी प्लेन रेंज है. अगर if we had a breakout above 85, then we can try GJ. So I can do something like this. We can पोटेंशियल ट्रेड एक जीजे के अंदर है, एक नया से अपन रीटेस्ट के तो ट्राई कर सकते हैं. तो आई कैन वन मार्क्स रेड जहाँ पर पोटेंशियल ट्रेड है. ईयू का अपने पास वही है, इधर ब्रेकआउट अपसाइड और डाउन साइड. अपसाइड हुआ तो आई थिंक न्यूयॉर्क में अच्छा वॉल्यूम है अभी. तो अगर ब्रेकआउट होता है अबाउट 20 तो अपन ट्राई कर सकते हैं टिल देन नॉन टेरिटरी. तो एक वो भी कर Yes. सकते हैं अपन. और उसके बाद अपने पास ये BTC हो गया. सी द रिजेक्शन ऑन BTC 4 आवर कैंडल. आई थिंक यार BTC की ट्रेड हो सकती है यार. सी BTC ऑलरेडी बॉटम में बना के आया है और अभी कैंडल हाइट तोड़ने वाला है. तो अगर ये यहाँ से फ्लिप हुआ तो अपने पास एक अच्छी ट्रेड हो सकती है BTC. Around say check 5 minutes. Check 5 minutes hard. Gold. कुछ नहीं यार, अगर तेरे को ट्रेड करनी है 5 मिनट के अंदर तो बस ये यहाँ से एनगल्फिंग है. यू कैन टारगेट दिस एरिया 24 पर स्केल करना. तो बट रेंज थोड़ी ज़्यादा टाइट है अभी. 60 कैसे ले टू टारगेट 40-35 की कंदन. मे बी अगर 20 से हम टारगेट करें तो हो सकता है. नो डाउट इन दैट पार्ट. बट फिलहाल इस रेंज में इंटर करने का प्लान नहीं. इधर अबाउट 20 से अपन इंटर करेंगे. बाय वो दिस और सेल अपना इसके नीचे है इन द सेल. ये गोल्ड की नोट रेंज है नहीं. सिल्वर का भी सेम ही जो है ना, एक प्राइस ने एक सपोर्ट क्रिएट कर ली एक जोन के यहाँ. लगता है यही एक रेंज के अंदर टारगेट रहने वाला चलेगा. क्या बोलेगा तो वेट पहले.
Oh, I think a good moment will come in next 1 or 2 hours only. Till that Yeah. time, we are just waiting, बस waiting, waiting. अगेन वो ये मेजोरिटी ऑफ द गेम रेटिंग का ही है। अभी फालतू अननेसेसरी ट्रेड के अंदर घुसेंगे जस्ट टू सेक ऑफ भाई ऊपर जा रहा है इंटर कर लेता है। ये सेटअप का वेट करो, सेटअप अपना बनने दो, उसके बाद ट्रेड करते हैं। जो कि ये जो हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर सिल्वर का अच्छा सपोर्ट जोन है। सिल्वर अगर इसके ऊपर आती है तो अपने पास एक क्लीन रेंज है ऊपर ट्रेड करने के लिए। बट अगेन सिल्वर अपन ट्रेड करते Yes, नहीं है, बट स्ट्रक्चर वाइज लुक गुड। फिर अपने पास एक BTC है। BTC इट्स लुक गुड 4 घंटे के ऊपर। और आई थिंक अपन आराम से इसके अंदर कुछ टिप्स भी कर सकते हैं। अगर करंट कैंडल तो 600 रुपये पैसा है, 600 तुम बोलो 60 दे दो और देन यू कैन टारगेट एटलीस्ट ये एरिया टारगेट कर ही सकते हैं। समथिंग maybe at least but lowest hanging fruit ज़्यादा जी even when the day is visited yeah इसलिए टारगेट हो सकता है। अब तो देखो बिल्टी से ब्रेकआउट भी हुआ है एंड टारगेट 1 to 1 से ऊपर के टारगेट हो सकता है बिल्टी से, क्योंकि बिल्टी से 4 आवर अच्छा रिएक्शन दे रहा है इस एरिया से। वही okay. क्योंकि सारे प्लेयर के अंदर यही हुआ है ना। देखो ये एक जोन है 4 घंटे के ऊपर जहाँ से मल्टीपल, देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ फिर सपोर्ट था, यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन में है इस एरिया के अंदर ये वाला। तो ये एक मेजर जोन है जहाँ पर प्राइस रिएक्शन दे रही है। यहाँ से ट्रेड जस्टिफाइबल है, एक ट्रेड ली जा सकती है। तो ये कुछ हमारी ट्रेड है और इसका ऐसे थोड़ा टाइट रख के अपने को इतना रखना नहीं है, बस करंट कैंडल पे नो पे नीचे ऐसा रखा है। क्योंकि अ, अगर ये कैंडल फिर से फ्लिप होती है देन इट माइट रीविजिट द लॉस अगेन। तो बस ये कैंडल का हाई है, ऐसे इसे नीचे रखो और तुम टारगेट टारगेट ठीक है तुम्हारा 14,722 727। एंड इसका लो है 11,458, सो 11 सॉरी 12,450। So ऐसा you can take You're giving a trade or you're just mentioning it? no no If somebody wants to take, तो guys मैं want to BTC put ट्रेड with नहीं it, कर, आई एम नॉट ट्रेडिंग BTC right now but this trade looks good, ठीक है। But bro it's a good trade है ना, तो even why not, why wouldn't I try this? Okay, I'm also going on this BTC. yeah, fair enough. So BTC USD till around 1.12450. Vijay is saying that there's a 7K FEG on gold on 5 minute. That 7K is paired with a order block also. It just tapped right now. 5 minute ये ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं क्या ये? सेकंड लोड होने देगा बाद प्राइस का। The 5 minute order block got tapped right now. पर गाइस ये एरिया मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार, आई डोंट वांट टू ट्रेड इन दिस एरिया। No, no, even me actually. Like I've इट्स already got a reaction from this area, got a lot of profits from that. टू मच I विक्स got हियर एंड out in देयर, break even. टू Why मच not? विक्स Yeah, टू मच विक्स हियर एंड देयर, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं इसको। अपने पास क्लीन रेंज है ना ट्रेड करने के लिए यार, लेट इट क्लोज बिलो 3711 देन वी कैन ट्रेड टिल 100 पिप्स।
So patience, patience, patience. But these are the zone on 30, so 15, 30 के ऊपर जोन ये है, and then अपना last जोन यहाँ था 95. If we go on hourly, तो hourly के ऊपर तुम्हारा last resistance zone यही था. That can become support potentially. तो अपने पास बाय के दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे एंड देन एक अपना जो पिवट लेवल है, पिवट दिस एफईजी एरिया समथिंग यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन अपने पास. तो वीटी पिवट, डेली पिवट, समय पिवट टू 2 आवर. अपने पास एक हैवी एफईजी भी है 70 के इधर, ये वाली. अब मैं इंडिकेटर आई नीड टू रिड्यूस समथिंग, थोड़ा स्लो हो जाता है बीच में. It takes some time to load. हाँ तो एक टेंशन रिएक्शन जोन ये है, एक ये, अदरवाइज वेट एंड वॉच. एंड हाँ BTC, oh thank you, BTC running fine brother. Good profits in BTC. Yeah. So this trade based on 4 hour, we need to take a record of this as well. So we deducted from the support area and then trade based on 4 hour and the targeting 14,720. Yeah. So so BTC running good. okay, BTC trade I didn't post on the Discord. Hold on. Let's keep on a record of this trade. So this is BTC. Okay. Not breakout, kind of reversal rate.
on BTC. So, The 5-minute order block on gold worked out. okay, nice. Let's follow the plan. Yes. Hey, you have 100 subscribers? Right. Yeah. 100 subscribers just. That's a new thing, brother. That's a new thing. I thought. The party. Okay. Let me see the BTC first. Yes. This was a Harami pattern, right? Yes. Yes, it is. Something. Yes. It's not some sort of confirmation, but I'm writing what I saw on that chart at that time. So tomorrow I look at my journal, so we at least have a record that okay, we took this trade because of this reason. And that's it. The British is going on. EU retracing a bit. Not a bit, it retraces after already 25 pips. And let's just go to, yeah. I think gold, silver will move the same thing. It was a fake out, price closed back, and now it can go towards sentiment. So that is gone. USA, nothing we have. GJ stuck in this range, or not a chance. GU, no touching over here until we had a breakout about 12. EU, dropping below. And if it's going down like that, it might tap to this FVG, and then we might have a entry again, some better entry. We have daily pivot, some 16K FVG, VWAP, so couple of things over here to enter on EU. We do have alert over here as well. And now, only thing we have left is gold. Gold is ranging. Though if we enter Kind of on looks like if we enter on this 5-minute order flow, we would have a heart attack, very big one. we would have ended on the 7K FEG to be honest. So your entry would go to 3719 and पार्टी से याद है instead of अरुण से लेंगे 55 गाड़ी pips. भाई तेरे अरुण जी को चल रहा है भाई डिस्कस कर लेते हो What happened? What happened? I am missing few context and let me check. कुछ पार्टी वार्टी इशू तुम्हारा पेंडिंग चल रहा तुम देख लो यार आप इसमें In Taj, okay, bro. We'll do it. उसका भी नंबर है कोई बड़ी चीज तो है नहीं तार दे तो देख वाला Ah, wherever we want to go, we'll go. मुझे लग रहा है फाइंड द बेटर यू शुड गो टू क्लाम फॉर पार्टी Atlam for party. So I don't know what is there in Atlam. Let's विजय go to Indore for party. विजय लिव्स इन क्लाम राइट Okay, yeah. The person who sent me the trade did not take the trade. I don't think so. I told Pratik Day to mention a good trade. Like I don't think so. He took it. That was a good 100 web top.
How much is did we reduce the SL for EU? Yeah, I reduced it to 60. We trained to the last 4 hour candle low. Okay. Almost 10 people. I need to buy a chair actually. My chair broke down. The gaming one. Yeah. Oh no, I know. I have exactly which chair I want to buy also. Okay, let me check. Can't you find the Amazon on Ireland one? I have not checked actually. It Okay. might be there. Looks nice. It has like lots of features. It has a Lumbar support. it has a massaging function also. No, you don't want to buy it, you know. Why? You're buying something else now. I don't know. So you have, I see a lumbar support right here, and then doing some massaging up in the. And what I see, these are recliners. Yeah, that's recliner also. Oh, single lumbar train, smart posture normally, sitting reminder. Oh, you have massager as well. Multi-direction adjustment, ventilator seat. This thing have fans. Okay. Yeah. See, ultimate luxury it should be. Wednesday the cloud. My And you have power bank as well. yeah, like my major thing is that I should not get up from the chair so often. Yeah, that is also fun. So one-time investment. Vendor. Yeah, that's a very big investment. That's the only thing. Okay, Dixie showing some major movement, not some major, but Dixie showing some bullish sign from this area. That is why we are seeing this reaction on. Oh, no, Dixie tapped this order block. If they are getting bullish, we might see some retracement on E and G both. Okay. Well, we can see some reaction on what or अपने को reaction नाम मिल सकता है कुछ तो वो क्या है? So
But I have this theory that we might, so this is a breakout, right? So we do have a breakout. Yeah. Now price tap to this FEG plus EMA might get some, reaction and then a continue drop into the downside. ऐसा भी हो सकता है. Yeah. Then Depend upon Dixie. Dixie कितना शूट करता है. That's only concern in this. BTC in daily time frame. Let me check first. When they say a daily tap to daily order block, tap to monthly pivot, and nothing much we can do on this right now. But I think we are at critical zone. If you see, Remember which we told earlier. Mm. Your RSI divergence yeah, on BTC. on 5 minute. No, in gold actually. Okay, I can check. So that did work. Yeah, so no, this BTC on daily we have this resistance level, we have that we can support, multiple reaction, and now price broke this, injecting from this area again. Okay, so expected potential reaction of few pips over in this area, and maybe price move toward daily pivot or weekly pivot and then continue down. BTC is like there are too much factoring into the play on BTC, so we just stick to the market structure right now. And तो उसके बाद अपन चलते हैं gold. You're seeing some market divergence, so let's go to RSI where we have 5 minute and हाँ यहाँ पे देखो RSI निकल जाता बेरिश divergence ना इस एरिया के अंदर that price is making Yes. it's not like this, so we are making some let's just say we start to make some higher low, something like this, and that over this area we making some lower high and lower low. So that is why price gets some sort of slight correction to the downside. अगर इसके ऊपर भी अपन एक normal trend line लेके चलते हैं ना, यहाँ से trend line draw करते तो we will have a breakout. Price come to retest this last resistance zone and then we draw with the तो ये तो हुआ अपना gold on 5 minute, but on higher time frame ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी. Look at the trend. Yeah, Trend. on higher time frame, it makes sense actually. See, so the trend is too strong. See, from here to here since morning we are shooting at the load. Then RSI is showing bullish and we in some oversold territory, but that is fine. And even the MACD from 3640 on this crossover on hourly we are keep on bullish. So ऐसा कोई sign मिला नहीं अपने को कि that we can look for sales and all. Around sunny check BTC in daily time frame. अभी check किया around BTC daily to daily BTC एक इस जोन से रिजेक्ट दे रहा है जो पहले भी रेजिस्टेंस था. वी हैड अ ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड देन अगेन ब्रेकआउट रीटेस्ट विद द डाउन साइड. एक पोटेंशियल की जोन है जहाँ से रिएक्शन मिल रहा है. तो अगर यहाँ से रिएक्शन मिलता है टू द अपसाइड तो ये अपने पास रेंज है. क्योंकि ऐसे देख के चलो लास्ट बार अपन इस लास्ट बार इस जोन पे टैप हुआ था तो प्राइस टैप करके एटलीस्ट विजिट 15,000 है ना. Yes. एंड उसके नेक्स्ट टाइम भी प्राइस ने यहाँ टैप किया था विजिट अगेन 15-16 के. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया उसको हम बात नहीं कर रहा. बट जब भी प्राइस ऊपर से यहाँ किसी एरिया पे टैप हुआ ना तो वी गेट सम रिएक्शन
तो 15-16 के, तो सेम लॉजिक एंड प्लस लुक एट द 4 आवर, वी सेम 4 घंटे पे सेम सपोर्ट जो है ना, यहाँ से एक टाइप रिएक्शन यहाँ मिला था पहले, सेकंड यहाँ थर्ड एंड मल्टीपल इस एरिया पे प्राइस से एक लास्ट कैंडल ड्रॉप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है इस जोन का। इवन तुम किस लो को काउंट करते हो ना, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है जब भी ये 4 घंटे का ऑर्डर बुक था, एंड देन प्राइस टैप टू दिस एफईजी, ये वाला एरिया था इधर। इसके बाद अपने पास एक बुलिश कंफर्मेशन आ चुकी है एंड देन प्राइस इज गिविंग सम रिएक्शन, तो अपन ने ऐसे इसके नीचे ही लिया है, क्योंकि अगर ये कैंडल वापस बेरिश फ्लिप होती है यहाँ से, तो फिर वी कैन प्राइस पर और फर्दर डाउन जा सकते हैं। तो फिलहाल सेफर बैठ यही थी कि इसके नीचे ऐसे करना, तो हार्ड में कितना ऐसा था, समथिंग 700 पिप्स। तो एक्सपेक्टेड है कि जो ऊपर एक क्लीन रेंज है ना, तो ये थोड़ी फील हो जाए, एंड ऑल Yes. दो यहाँ पे माइट बी प्राइस ट्राइजल टू ब्रेक इट आउट बिट, जो अगेन सेम वही रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन हुए हैं, दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ सपोर्ट था, वंस यू ब्रेक वी कैन शूट अप, एंड इफ यू डोंट फाइंड एंड आई सी सम वेरी स्टैंडल इन बिटवीन, then we can even reduce our SL, तो ये भी ऑप्शन है। बट इस कैंडल में कोई ऑप्शन ही नहीं है, SL तुम्हारा यही आएगा इसी कैंडल नीचे, और तो बीच में इन बिटवीन पोजीशन है ही नहीं है, तो ये तुम्हारा BTC है। कोई चैनल बनाना है मेरे वहाँ पे, I see one, Unnecessarily, you'll create a channel, bro. I see one this, I see one this। बाकी बोलो ठीक लगा, देखो बोले आई मार्क दिस करेक्टली ऑन 5 It's been just bouncing up and down only, so we'll just wait. तो बस, तो And फिर if it bouncing here and Euro there, USD is about to take the SL, SL as well. not SL, we're Trailing in SL. 10% profit, so that is fine। Yeah. तो फिर Dixie reacting from the support level, right? We have resistance that determines support right here, resistance support file, multiple direction से read it। तो यहाँ से अगर Dixie shoot होता है to the upside, तो expect AUG to go। ऐसे हम डिवाइस पर चलता है Dixie इंस्टेड तो अब we do have some time, gold delivery ऐसे ब्रेकआउट नहीं होने वाला है, AUG is still stuck in that range, BTC is also fine, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आगे फिर जैसे होता है एक मैच चेक का हो सकता है। Okay. भाई यार विजय चेस खेल रहा है किसी के साथ? He's a pro chess player. तो No unnecessary movements, okay? अरे भाई क्या नेसेसरी, और क्या चेक, I just told you, no unnecessary movements. I'll back off। Yeah। I saw that coming also. Rematch. अरे तो स्ट्रीम पे लेट आए भाई, एक BTC में ट्रेड अपनी रेडी है, आई कैन शो यू राइट नाउ। हमारी एंट्री डिस्कॉर्ड में शेयर करती है वैसे, तो तुम वहाँ से पिकअप कर लो जो डिस्कॉर्ड पे है। बाकी डिस्कॉर्ड BTC तो ये एंट्री है अपनी, वी एंटर्ड ऑन दिस 4 आवर फ्लिप, SL इसके नीचे करंट कैंडल के नीचे, एंड देन टारगेटिंग 15,000 एरिया।
and Mhm. so yeah, I tried to put in a trap. Yeah, yeah, I saw that trap. Nice one. Jump. Mhm. Yeah, that is gone. Oh Well, no, what did I do? although I did a bad mistake over here. What's the whole application? I'm going to lose this game very badly, right? No, it's not like that. Yeah, I did right. Yeah, that guy. Okay. Okay, there is to kill that thing. No. Okay. 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 Then what can I do to you? I think You can do multiple things, of course. I just gave you a check for no reason. And that was the dumbest check I ever gave. I thought for a while it was a trap or not. I'm like, okay, leave it. If it is a That- trap, I'm willing to take it. So let me see what I can do on here. Oh no, Manoj, you got me very badly. Oh, Oh, oh. okay, move this thing. Okay, I did a crime. I did a crime. Yeah, yeah, yeah. That's what I do agree you did.
It was unexplainable. So they you try to kill me all with this. I have to save myself from here. Okay. Tough choice, Manoj. Tough choice, to be honest. So again, I play my hand very down. Actually, no. Dude, why? Yeah, because you think you did it very nicely, but you think you almost got me, but Yeah, you have to play my hands, you know. Well, yeah, of course. Makes sense. okay, so what I can do to you? Nothing. Here I did a grind. Mm, okay, Manoj. What just happened? I can't even mold this. So you literally think that thing. Yeah, the check if you move. Thank you, bro. Thank you. Thank you. I appreciate it. I'm not playing now. How can somebody winning that game and losing it? You trapped me. Oh, It gold was a did. winning game for you. Gold gave us some 300 pips. No, 300 pips. Sorry, British. And then it was. And somehow, for some weird reason, we're still surviving on BTC. I am surprised that we are still surviving on EU. Oh, sorry. EU, yeah. Probably is another EU. EU is still here. Still here as well. Look at this 4 hour on UJ. If this goes like this, UJ on 4 hour, we are kind of respecting this John. They can keep on extending it. With this is a major 4 hour support resistance zone. See, resistance support, resistance again, a couple of Yeah. resistance, and then now we Oh, stuck that's at good. this. So if this 4 hour goes like this, expect this to do something like this. Yeah. You want I want 2 hours, so 2 hours is about to close. But again, do you want to take this? It's not so clean, I can see. But the SM is hardly 28 pips and the reward is 37. So there is a 1-to-1 chance you can get on this trade. Okay. So you And want to destroy the very nice streak which we are having, no, no, or you no. want to wait and go for a good setups? Yeah, just wait and Good choice. there is a chance we might get some take out on bully. Breakout to the downside or upside? Either side, I don't care. I don't care either side. Okay. BTC now giving some good vibes now. Because it retraced the full. Yeah, it see the thing it It showed retraced up, fully, right? it gave us 300 pips and now it started to come down.
Right, you can see in this range, it did give us a breakout right here. If you this area, we do have a breakout, and then it showed towards on this candle of over here, so 290% to gave 330. This it gave already, and from there it started to retrace. But as long as we do respect this area, I'm fine. If you go further than that, but our SN is very low, and let's see. I'm still holding, not in plan. That's the good evening, brother. Gaurav, there's nothing again. Yeah. What to do? Again, bro, we can play chess, or there is no question in the chat anyway, so it's number 10. Or we can stare at charts, mark some zones, or we can do some dot test if you like. I think we should do some back testing. Okay, so which player you want to Same as usual. only? Goldie. Okay. So goal, let's just pick which time we're going to pick 15 minutes or let's just trade on 4 hours. Okay. Let's just go back to some 4 hours. We go back to some, let them delete everything. So we do have some nice thing. We went to July 24th. Or any some random places like. Okay. So 2165. So we went to Mars 24. Let's just start. So on any time frame we can trade on that time frame. That person, that time frame. 1 hour. 1 hour seems too mainstream. Yeah, 1 hour. Or if you're doing 4 hour, it's fine actually. Let's do 4 hour. Okay, so we don't need anything, no session, nothing, just pure market structure, right? So that's it. Yes. So Yes. we just need order block. So let's just say we tap to this order block right now. We do have some sort of support, resistance area, this area. So we can see like Yeah. this, if this next, so look at like this. We have expansion to the upside, now we will coming back to the downside. If we tap, we do have this bearish closure, then we are doji, next candle is bullish, I guess. Okay, again, this is nothing to take care of this candle, but if we have some sort of a breakout about this area, we can try, and then we do have the Indians event to do it. So, and on the sell side, if I get closer below 20 and 45, then we can sell. Okay, Yes. nothing much, pure plain market structures, no fancy things. Okay. The price do create a resistance right here, and then we can go towards this zone. If we get it We closer, can and then we have this one. we can enter a buy, right? Or you're waiting for that
support to break. No, but The resistance to break. so see, we do have this resistance right here. Look at this. So we do have this Yeah. resistance, and you can drag it down to this side. But we need a closer item of that. ना प्राइस में भी टैप दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन ड्रॉप, सो अपने को बाय करना है तो कुछ क्लोजर चाहिए, उसके बाद अब हम देखते Yes. हैं तो नथिंग। ओके, अब देखो ये ब्रेकआउट हुआ, अपन ने तो जल्दी एंट्री थोड़ा मैंने आई मूव द कैंडल वेरी फास्ट, तो इसको थोड़ा स्लो करते हैं स्पीड को रिड्यूस टू सो अपने पास ये ब्रेकआउट हुआ, अपने पास ये रेट है डन, तो Yes. इसके फ्लिप के ऊपर ट्रेड लो, ऐसे नया रखो अपना, एंड देन टारगेट दिस एरिया एटलीस्ट ये वाला, एंड देखो नेक्स्ट कैंडल तुम्हारे पास अब लिटरली वो तुम्हारा ये टारगेट हुआ ना, तो ऐसा कुछ तुम्हारा सिंगल ट्रेड था 4 घंटे के ऊपर, इट गेव यू 200 पिप्स डन, बट अब तुम्हारी Yes. एंट्री शुड बी ब्रेक इवन एंड देन sell to break even, low passing whatever, next candle we might take you out, जैसा अपने देखा था थोड़ा पहले, तो अपन बाहर हो चुके हैं। एंड नाउ द सेल सिनारियो में यही है, इसके नीचे सेल करेंगे, इस रेंज में नहीं वैल्यू सेल करो, ठीक। हाँ, अगर इन केस अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश क्लोज होती है देन वी बाय अगेन। Makes sense. Yeah. इस कैंडल पे मे भी यहाँ से ये बाय हो सकता है, बट नॉट ट्राइंग दैट। अभी होल्ड, अभी सेम स्ट्रक्चर, प्राइस फिर से देखो इस 4 घंटे सॉरी स्ट्रेट 4 घंटे इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर थी, अपने पास फिर से बुलिश स्ट्रक्चर क्लोज हुआ है, यहाँ पे प्राइस चुका है, बट अगेन तुम वेट करना चाहोगे कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो ना, तुम्हारा लास्ट जोन ये था, ये एग्जैक्टली जोन पे बच्चों, ये कैंडल तुम्हारी बाय की कैंडल बन सकती है, तो इसके ऊपर वन बाय ट्राई कर सकते हैं ऑन फ्लिप ऑफ द लास्ट कैंडल, एंड देन टारगेटिंग दिस तो 1-to-1 है, एंड बाय स्टॉप उसके ऊपर ये विलेज होता है, ये टूल है MT5 के अंदर, वहाँ पर अपन यू कैन सी हाउ ए सिंगल कैंडल गेट प्रिंटेड, तो वो टूल में नेक्स्ट Okay. बार ट्राई करेंगे, मतलब बैक टेस्टिंग अच्छा रहो। इसके अंदर क्या अपने को डायरेक्टली कैंडल क्लोज ही मिलती है, बट वो कैंडल स्टार्ट में ऊपर नीचे कैसे हुई थी ना, मतलब बाय कैंडल केम डाउन गोज बैक अप एंड कुछ दैट जोन, तो वो था नहीं उसके अंदर, तो Okay. वी हैवंट एक्टिवेटेड इट बाय स्टॉप लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर। Yeah. On the flip of the candle. Yeah. तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो आते हैं फिर है ना, एक सेकेंड, अब वी आर एक्टिव एंड एसएल वी रिड्यूस दिस एरिया, समझ रहे रीजन, लास्ट कैंडल हाई के ऊपर क्लोज हुआ, वी डिडंट गेट No, एक्टिव, makes sense. Yeah. है ना। Yeah. और हमेशा ये ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम्हारा जो बाय स्टॉप हो ना लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही हो, ताकि जब ये तुम्हारे फेक आउट मूव हो तो इसे तुम अवॉइड कर लो, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन दिस ट्रेड फॉर 8 आवर्स एंड देन प्राइस डोंट इवन मूविंग इन योर डायरेक्शन। अब तुम्हारे पास ये सीन है कि तुम यहाँ से बाय ट्राई करो, ऐसा यहाँ के नीचे, अल्लाह जस्ट सी अब क्या होता है। ठीक है, स्टिल कैंडल डोजी है, अपने को थोड़ा रिएक्शन मिला यहाँ से, कितना 50 पिप्स, एसएल था 80, नॉट वर्थ वाइल टू रिड्यूस आवर एसएल और डन, टिप हिट्स मॉडल्स कुछ नहीं फिलहाल। 4 आवर के ऊपर भी अच्छी है, मतलब जो वो अगर तुम्हारा टाइम फ्रेम ऐसा है ना कि फिर गोइंग टू ऑफिस है ना, वो लेकर तुम्हारे पास ये हर कैंडल I देख should not have time actually. Yeah. देखने का टाइम नहीं कि 30 मिनट 15 मिनट कैंडल क्या कर रही है, 4 घंटे में ट्रेड करो आराम से, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बस दिन में 1-2 बार फोन चेक करना है कि भाई ठीक है प्राइस क्या कर रही है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है नहीं हुआ, दैट्स इट डन। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कुछ ओल्ड टाइम हाई के टेरिटरी एरिया में है, या मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, जहाँ भी है 24 के अंदर, ये तो ओल्ड टाइम हाई तो नहीं है, तो अगर प्राइस रीटेस्ट करने आती है तो वी कैन एंटर बाय अगेन, अदरवाइज अपना बाय चल रहा है, ठीक है। तो ये तो अच्छा होता है यार, बाकी एटलीस्ट 600-700 पे मूव 600. एंड वो भी 4 आवर के ऊपर सेम मूव अपना ही था, जो अपने फ्राइडे को लिया 600-700 पे का मूव था, चल रहा है अभी तक, कोई इशू ही नहीं है उसके अंदर।
अब अगेन सेम लॉजिक है, 4 घंटे के ऊपर भी अपने को तुम्हारा एक सपोर्ट जोन क्रिएट करना है, फिर रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, और उसके बाद जो ही फिलहाल तुम्हारा ये जोन है। अब इसके ऊपर नीचे जो कुछ होता है अपन इधर बाय या सेल, तो सेल अपन इसके नीचे ट्राई कर सकते हैं, एंड देन सॉरी बाय इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्योर इलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है ना। Yes. आई नीड a ब्रेकआउट। ब्रेकआउट नहीं हुआ, नो ट्रेड। इट कुड रिसीव। ओके, नाउ वी हैव ब्रेकआउट। तो अब ये ब्रेकआउट के ऊपर तुम ट्रेड ले सकते हो, समथिंग लाइक दिस। एसएल तुम्हारा यहाँ पर 220 पे एसएल है, रन टेरिटरी, तो एटलीस्ट विल टारगेट 1 to 1 मिनिमम, एंड देन अपन एसएल रिड्यूस कर देंगे अकॉर्डिंगली। नाउ रिड्यूस योर एसएल टू दिस कैंडल, कीप ऑन गोइंग अप। अब तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें 1 to 1 मिल चुका होगा इस एरिया तक हार्डली। सो 240 अपना कितना चलता है, 200 तो 1 to 1 मिल चुका है, तो यू शुड बी ब्रेक इवन बाय नाउ, एंड लोग मेजोरिटी ऑफ द पार्शियल्स, मतलब नॉट मेजोरिटी, लोग 50% एटलीस्ट। तो तुम्हारा एसएल यहाँ पे आ चुका है, एंड देन तुम स्टिल इन द ट्रेड। ओके, वेयर आउट। But we did not actually take a loss on that. हाँ, तो ब्रेक मतलब इफ यू गो ऑन, सो आफ्टर 200 पिप्स यू आर नॉट लॉगिंग पार्शियल, देन यू आर इन ट्रबल एनीवे। ठीक है ना। Yes. तो ये से वो आई सी सम सॉर्ट ऑफ चैनल टाइटल अमित सानी, इफ यू डोंट हैव एनी प्रीवियस हाई, हाउ डू यू डिसाइड दैट टारगेट? अमित सानी 1 to 1 लेके चलो हमेशा। तुम्हारे पास 1 to 1 मिल रहा है, तो एटलीस्ट उस 1 to 1 के ऊपर तुम 50% क्लोज कर लो। तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है, 50% क्लोज किया, तुमने एसएल रिड्यूस नहीं किया, तो इन केस अगर तुम्हारा एसएल हिट होता है ना, वजह से ये ट्रेड थी, अपन ने यहाँ पे 1 to 1 जैसे इस एरिया पे 1 to 1 क्लोज कर दिया, और तुमने 50% पार्शियल लो कर दिया, बट एसएल तुम्हारे यहीं पे है। हाँ, इसी की बात कर रहा। भाई ये अपनी ट्रेड थी, अपन ने यहाँ से बाय किया, 1 to 1 तुम्हारे यहाँ पे हिट हो गया है। तो अगर तुम यहाँ लेके चलो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम इस एरिया पे 50% क्लोज, एक सेकेंड ना, यू कैन क्लोज 50%। सो इन केस अगर प्राइस वापस नीचे आती है, तुम्हारा एसएल हिट करती है, तो यू विल बी ब्रेक इवन। एक सिनेरियो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम यहाँ पे 50% क्लोज करते हो, एंड रिड्यूस एसएल टू एंट्री, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर ये प्राइस वापस अगर इन केस तुम्हारा रिपीट करती है, तो देन यू माइट मेक द पोटेंशियल मूव। तो उसमें क्या होगा कि तुम एंट्री से आउट हो चुके हो, बट तुमने 0.5% लो कर लिया, बेसिकली ये होगा। अब देखते हैं इस प्राइस का क्या होता है। देखो, अब देखो इसमें हुआ क्या अपने साथ। अपना आइडिया सही था, टीपी हिट हो गया, वी गेट समथिंग अराउंड 5000 पिप्स, सॉरी 500 पिप्स ऑन दिस इन दिस ट्रेड। बट अब लेकिन इश्यू ये था कि अपन ने एसएल टू एंट्री पे लिया है ना, तो इस एंट्री के चक्कर में अपना पोटेंशियल मूव चला गया सारा का सारा। तो ये थोड़ा अग्रेसिव है, बट इसमें इन केस अगर तुम्हारी ट्रेड वापस एंट्री पे आती है, तो तुम उससे मार्केट ट्रेड से आउट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम एसएल टू यहाँ पर 50% क्लोज कर लेते हो और एसएल को मूव नहीं करते हो, तो इन केस प्राइस रीटेस्ट करने आई और देन समहाउ तुम्हारा रिपीट हो गया, तो तुम्हारे पास पूरी ट्रेड पूरे मूव को राइड करने का मौका है। तो अब दोनों देख लो, तुम्हें अगर थोड़ा अग्रेसिव खेलना है या तुम्हें थोड़ा वो खेलना डिफेंसिव खेलना है। ये डिफेंसिव मूव था, क्लोज 50% एसएल टू एंट्री, तो एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो लो 50%। बट इन केस अगर तुम्हारी ट्रेड पूरा मूव हिट करती है, तो देन यू लूज पोटेंशियल 2%, जो तुम्हारा ओवरऑल टारगेट होता है वैसे ही। तो ऐसे से अननोन के अंदर अमित की वही है, या तो फिबोनाची ड्रॉ करो, या तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार करके चलो, और एटलीस्ट हमेशा 1 to 1 1 to 2 पे सेफ होके चलो, ताकि अननेसेसरी लॉस से तुम बच सको। ठीक है। मुझे उधर नहीं है। अब देखो ये तुम, है ना, एक तुम्हारा ये नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरे को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी देखो तुम्हारे पास, देखो गोल्ड ने सडन मूवमेंट मिला है कुछ, अपने तो एक पोटेंशियल ट्रेड मिल सकती है। देखो अब ये रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ईयू के अंदर, सॉरी गोल्ड के अंदर, ये तुम्हारा एक
सो रेजिस्टेंस ये, सपोर्ट ये। अब वही तुम्हें स्ट्रक्चर लेके चलनी है, एक यहाँ पे तुम्हारे नीचे, लेट्स जस्ट गो टू नेक्स्ट कैंडल। अब ये कैंडल तुम्हारा मिलिट्री एंगल्फिंग कैंडल हुआ है, और अपनी एंट्री यहाँ से थी पहले वाली 93 से, तो तुम ये सारा पोटेंशियल मूव मिस कर देते हो वही ऐसे एंट्री वाले सीन के चक्कर में। अब यहाँ पर देखो एंगल्फिंग कैंडल है, तो तुम यहाँ पे बाई कर सकते हो, वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल की साइज भी अच्छी है, तो बट 4 घंटे में ट्रेड ले रहे तो भाई ऐसे लिखने जाएंगे 200 300 400 पे, तो टारगेट भी नहीं प्रमोशन में लेना पड़ेगा अपने को। तो ये 2342 है, तो एटलीस्ट अपने को 80 के या 2400 का टारगेट रखना पड़ेगा। चलते देखते हैं। आप इसका एसएल अपन रिड्यूस करके यहाँ ले आएंगे, तो ये अगर प्राइस पे फिर से नीचे आना है तो आई डोंट थिंक सो कि अपने पास एक वर्थ पॉइंट एंट्री रहेगी। और आई थिंक अपन बचे हुए हैं फिलहाल थोड़े वक्त, बट जैसे क्या होता है ट्रेड का, और वही तुम्हारा नॉर्मल टी पीरियड जो होता है इसी नारे का, तो वो ये 4 घंटे में ट्रेड हो सकती है, बट वही तभी करना जब तुम्हारे पास वो इश्यू हो, तुम्हारे पास वो टाइम का इश्यू चल रहा हो। सचिन कुमार गोल बैक चैनल अपसाइड, बॉयज बैक टेस्टिंग कैंसिल, मूव टू द ट्रेडिंग। Go break the channel to upside. तो Hey, this is all of a sudden FMO. Nice. एक सेकंड ब्रो, आई हैव सम टाइनी प्रॉब्लम। You are right. Huh. You're right, Anuj. If you would have taken this 5-minute order block, it would have ruined our day. हेलो ओके, द टाइनी Yeah, ब्रो। you're right. Yeah, हाँ if you are right, if you would have taken that 5-minute order block, it would have ruined our day actually. Up and down, up and down, up and down. Multiple times it happened. हाँ ना, देखो देखो ट्रेड काम करने को कोई भी काम कर सकती है। आप नोट सेइंग कि 5 मिनट में ट्रेड करना बुरा है, बट लॉजिक वही है कि व्हाई यू वांट टू गो इन द लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। कोई अच्छी ट्रेड में चलते हैं हम, देखो ये तुम्हारा ब्रेकआउट है, वी डू हैव चैनल Yes. ब्रेकआउट, अगर ये ट्रेड लेते हैं अपन तो कितना एसएल है, तो वी कैन ट्राई टू टेक attempt this trade, but the only question is how big would the SL will be। 30 मिनट और 60 मिनट का SL है, तो भाई अगर ये ट्रेड करते हैं तो प्राइस शुड गो टू ऑल टाइम हाई। So what do you say? Should we enter or should we wait for a legit breakout over this? I would suggest let's wait for a breakout. Yeah. Maybe I'll have a tough decision. Anyway, क्योंकि ये 15 मिनट की मेरी रेंज ऑलरेडी फिल हो चुकी है ना, Yeah. एंड देन तो फिर अपन इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड विल रेंज इन दिस एरिया थ्रू आउट द डे के एनवाई के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुका था एशियन एंड लंदन के अंदर। तो अब भाई क्या बोलते हैं सचिन, अपन इस ब्रेकआउट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आर वर्थवाइल नहीं है। अगर 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं इस यहाँ के ऊपर, तो ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्शन है। ऑल्दो इट कैन शूट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपना SL 60 विप का है, यहाँ पर पोटेंशियल रिएक्शन आ सकता है अगेन, तो फिर Better setup rather than this. it don't be illogical to risk that much money at this time anyway। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो अपन ट्रेड कर लेंगे, तो अपने पास है विथ टाइम। लेट दिस 30 मिनट क्लोज। अब ये 30 मिनट ऐसे कोई होती है, और मैक्स 15 के ऊपर अगर ये अपने को ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर, तब हम ट्राई कर लें हैं बाय लुकिंग एट द वॉल्यूम का मेरे पास एक्शन। सो गोल्ड 15, देखो यहाँ पर देखो सीन क्या, वॉल्यूम वाइज भी थोड़ा मेरे को थोड़ा ट्रबल क्यों लग रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो सेलर कंट्रोल में थे, सडन बाय टू कोर देम, फिर वो बाय सेल एवरेज के ऊपर वॉल्यूम, एवरेज के ऊपर ट्रेड चल रही है, बट अगेन सेलर थे देन बायर है। अब इन केस इफ दिस कैंडल बिकम अ फेक आउट एंड ऑल्सो देन विल बी स्टक हियर फॉर नो रीजन। तो एक बार जस्ट एक क्लियर ब्रेकआउट का वेट कर लो ना, क्योंकि हार्ड इस रेंज में इतना बचा है 10-15 तक, है ना। So let's put an alert out there। तो ना अपन 4 घंटे में ट्रेड कब करेंगे?
जब अपना वो चल रहा होगा ना कि लंबा ट्रेवल का प्लान चल रहा होगा, देन विल ट्रेड ऑन 4 आवर, फिर वो कैंडल भी थोड़ा बड़ी होंगे ना, 300-400 की कैंडल होगी मोस्ट प्रोबेबली, और देन फिर उतना टाइम उनको Yes. टीप हिट करने लगेगा, तो बस उसी को ट्रेड करेंगे ऑन द ट्रेवल, है ना। अभी नहीं कर रहे। You No, while might, traveling makes sense actually. you guys might hear some background noise because यहाँ पर थोड़ा वो सीजन चल रहा है, गरबा थोड़ा गरबा का आज से स्टार्ट हो गया ना भाई, वो नवरात्रे, तो यहाँ पर फुल डीजे मोड ऑन है। Okay, BTC reacting, respecting this resistance to support zone right now, so I think we are good so far. It was safer SL look on BTC would be around 11,700, okay? That's the safe bet. But अपना इतना लंबा सीन नहीं है, मेरा सीन ये है कि if this 4 hour flips bearish again, there is no point on staying this level. So anyway, BTC में अपन इतना कुछ ज़्यादा इस करते नहीं है, मेरे तो hardly, let's just say, out on है less than 25% risk है। तो at BTC देखा करो, Exactly that. try forward करना बहुत जरूरी है अपने बारे। मेरे को स्टिल somehow मेरे को याद है ना, अपना वो कहाँ था, अपना एक जो ट्रैप था ऑन 15 था वो, उस दिन तो ये वाला, ये नहीं था, इससे पहले ये वाला था जो यहाँ पे, Yeah. जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, देन आउट है, लेट्स टेक दिस ट्रेड, मतलब यार नहीं नहीं नहीं, इट्स टू इजी, वो इज लाइक टू गुड टू ट्रू। तो ये था 37 तो बाय करने का प्लान, इट वुड वी वुड रैंड इन दैट ट्रेड, तो थैंक गॉड इट सर्वाइव्ड। एंड उसके बाद देन वी हैव एनएफपी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड ऑल, तो दैट्स इट। We'll wait actually. तो गाइस अभी देखो कोई ट्रेड नहीं है, विल ट्राई टू फाइंड सम बट नथिंग मच, और until or unless my internal I got some internal satisfaction that to entering this trade that met our trade plan, and तब तक मैं ट्रेड में enter नहीं कर रहा, so we have to wait। Perfect. चाहे वैसे भी एक ट्रेड हुई है आज की, एंड देन बीटीसी चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि Euro USD is going on. In हाँ gold, we do not take any trade today, हाँ, but Euro USD is going on. That is still going on. It's very nice going on. अब देखो, BTC, yeah, BTC is also went well. हम्म, अब देखो ये ट्रेड यहाँ से if it shoot up then we might have a trade in next 15, let's just see how next 15 goes। Even I think so. बस मतलब लास्ट, ये लास्ट 15 कैंडल का वेट करते हैं, if we don't get any breakout by then it enough for today, है ना। We'll close for the day. Yeah. Okay, cool. And expect some, but I'm a bit positive on BTC that we might shoot up a lot to the upside. Till I put the BTC chart, yes, I put the BTC chart, and
But this would be how much? A lot. 600 around. Pips, yeah. Maybe I could add one more column and then we can enter like this. What time we take this on? BTC's pips are very. British I count this like as 100, So if you are 113,000 and if it goes to 114,000, so that's 1,000 pips like that. Yeah. Okay, folks, 10 more minutes until we close the stream. That's it. उसके बाद I think on this 15 closer, this will become an order block. And there is a slight chance then you will get some reaction from this order block. Something like this. This would be what I said, nice to try if this 15 code close like this, and then we expect next to come down and then tap this order block and then shoot up. See, this 15 order block got respected, even it did take some time, but it did give you. It took a lot of time, but it did give 80 pips actually. It gave you some hard hitting in the start, and now it gave you a tooth. So same, if this close like this, then we have a legit order block about to be made, and then we do have this FVG. So we can enter on something like this 23, and then SL would be below these low. So SL you can take 1650. Dude, that's a big SL, big SL. So 1650. So that would be 65 pip SL. And then you need to target at least, there's not enough range on the top. And now I see there might be some reaction from this UI as well. So let this candle close in 6 minutes. We have both options. When this candle close, do a breakout, then you can enter and buy directly, That is the one option. If you don't get a breakout, with some, I need some solid candle closure, not just like, some tiny like this. Need at least some good candle closure. Then we can take a breakout rate. So we are about to do a breakout over this area.
but need a candidate over there. If that doesn't happen, then we can put a buy limit over this zone, and then we can try to scalp some 40-50 to some bolt. Yes. Good, we have 5 minutes. Do you want to play one more chess? Okay, let's go. Okay, Wednesday. What revenue? You can easily beat him. Now, last year I took Queen, you know. Send the request. I did send you the result. Is it? Okay, let me go to home. Oh yeah, got it. Okay. Sorry. What cool. It killed something. We are barbaric people. Oh, it's my move again. What did he move? Yeah. I Don't be don't fast. I don't even know what did he move. Also, you move this black thing right here. You like to play without reading this match. This is the bad call. Didn't move too fast. It didn't give a chance to think. Life is meaningless. No, I did not understand why you played that also. I do have pretty defined plan, and then before I think, okay, just click it, and then okay, done. I'm done now. I can't say much on that. Okay, you try to mate me. It seems.
No, 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 I cannot meet you. Okay, How don't can I meet you? mate me. I don't want to defend myself now. Is Okay, it? Okay, drop it fine. down to the end, and I'm done. Yeah, I if I drop it anywhere, so it will be done only. I hate you. Okay, guys, we do have this 50-minute order block about to get valid. तो एक ट्रेड ली जा सकती है यहाँ से and on the check. Do you want to Yeah, enter on FEG or would you want to enter on the I will order? enter on order block. Yeah, I think so because 22.2 is my entry. I think it's like too much of a range because the Yeah, range we are in is not that much. So better option ये रहेगा अपन order block enter even target 27. So 22, 22.2, right? so I'll enter 20 and target again 27. 17.5. We can target what? 27. 27. Please, yeah, we फिर भी एफईजी थी जिसकी प्राइस ओके यहाँ पे कितने की एफईजी थी आई डिस्क्रिप्शन ना Where earlier there was, oh, this 11K FEG actually on 15 minute. यहाँ पे 9 की एफईजी थी ना 9 के then price literally through it came to literally tap the order block and then showed up so Yeah. same structure follow करते हैं तो cancel I'll enter on you can even enter directly on this because जिस तरह के जोन के अंदर मुझे लगता है कि order block जस्ट स्लाइटली टैप करके जाएगा we can literally see a deeper pullback so you can Yeah. enter 2250 to be precise. Why do I feel that this order block will not work out actually? Yeah, we can Oh, I am entering with a low risk only. let me think again. We are in the zone and no breakout in sight. This FEC is right there. Take counting the squares to a target breakout. And then we can target how where is the area. ADR is 29.5. We can give the first target as it's 100% ADR. 125% ADR comes at 41.41 actually. You can target 41. Yeah, 29 के ऊपर है and then अपने पास 41 है इधर. तो entry है 2250. Okay. Not 2250. You Yeah. can take 2220, but in case it just slightly tap and then active, then you are in trouble. So let's just take Yes. entry correctly as possible. So buy limit. And that's it. इस कैंडल का वेट किया जाएगा only if we don't get active by next 10 minutes. We're done. We're done for today. Then we can target the ADR.
Hmm. Okay. Okay, so 37, 37. Lower is than usual, so I'm only getting half risk and then people will target acceptation. But I am feeling like that we won't even see the breakout today. It might stuck in the same range. I think Asia would give the breakout actually. Yeah, last 4 hour Dow Jones is 4 hour is still showing some bullish on, but it haven't broken the last candle high. That is the only concern I have. If it breaks this high, then you can think something that price could shoot a bit up. But right now, just stuck over here. Okay, we might have 13 about the low zero. It might also get printed right here, 23 to this. Same 1530, but our entry would be the same. I know one thing I like. I think it's Yeah. not the cable there. Nor the technical stop, but I think it's a time stop. We are late in the night. There is no point to take a trade right now, We we have to draw this line right now. We already missed the man move. Usually by this time gold के ऊपर breakout मिल जाता अपने को. But अभी नहीं मिल रहा है तो just not worthwhile to try. Let's see how this 30 left. Okay, guys, I'm deleting this buy limit and I'll see you tomorrow. No point to take trade this late at night. I'm done for today and I'll see you in London session. Okay. You're deleting the buy limit. Yeah, man, I think this is a bit late right now. And Okay. with no point to take a breakout or his replacement by, but anyway. Yeah. Fine, fine, fine. So I'll see you tomorrow, folks. And again, the trade is still valid. If you guys want to take, you can take, but put it near the guys. Too late in the night, we might see a fake out or whatever. And I see something. On 30-minute, we might get a breakout. So we have to hold on a bit now. How is the volume? So yeah, the volume we got some nice areas.
Okay, and I think we are done, man. It can be fake out some liquidity sweep again, so no problem, you know. I am waiting for this closure above. Let's see, actually, like if there is a deeper retracement, then I'll end. Otherwise, today's day is done anyway. But you okay, 4 मिनट और रुक जाते हैं. Huh. तो I think the PI already reacted once. So okay, I'm not third मिलते हैं दोस्त. 12 मिलते हैं सुबह. yes. It is coming down a bit, but again, not in the plan. I'm not touching BTC right now. That is the intent we have. That is ISN. That's it. If you survive, you survive. If you stop, we stop. Nothing much. Oh, it had to some 15-minute block right here. So I know I need to respect this order block. We are good. And if not, that will also be. I think whether we might see a breakout on gold right now. I've seen in the gold, you see, there's a breakout right now on gold. Yeah, breakout is there actually. So, so 2 more minutes. So that brothering that 5-minute thing worked out fine then. If you look at this, that 5-minute channel you made. Yeah, it worked out actually. Yeah, Like, it went out. So see, if you want to enter a breakout trade, it's just purely. no, the thing I want to enter a breakout, but the thing is it's too late. Yeah, exactly. That's the only concern I have. The time is the concern for me. But so breakout is fine, you know. I think we can take this trade over there. So यहाँ पे भी यही हुआ था. It was slightly some breakout over then this time spent either you or light cake. And gold can shoot at a load, no doubt in that. But it's a timing issue. Otherwise, it looks gold. We know, okay, now it's not good. Now we do have some clean thing. So let's just see. Okay, we might have a trade. What can we do anyway? It can just go up from here also. Yeah. So if you gonna enter on this trade, then there will buy stop one flip of this candle. That's it. And then we'll try to reduce SN very fast. See this 5-minute got a breakout. And we reduce our SN to 25. And then you can see it can shoot up what is it. So, but if it goes up, then we can target the 41 area. Right? So breakout works, you know, any time frame. Breakout do work. So this breakout, 5-minute, although there is not enough range, it would have given us a heart attack for some time. But again, so I think it gave 56 pips already. So we do have this 54 pips and it gave 51 pips. So yeah, that is. Let's see, I don't want the quarter news on fake out. You did remove the sell limit, right? At 100% ADR. Yeah, I don't have anything. I don't put even. Once it reacted right below the ADR, I removed it actually. If it was a psychological move, I would still keep it, but no. Okay, on the 8 second, we do have a closer, so that's your trade. Now, if you want to enter, that's a clear cut breakout. And if you go long over here, so that would be high of this candle. SL was right here, 87 pips, and even target whatever 41 area. So, or let it come down a bit in this area, and then it so both options are open. Okay. So high of this candle is 32.10. So okay, it got broken. Let enter. Okay, I'm entering in a buy. Yeah. And again, I'm half risk than usual because this with all-time high. So let me reduce. SL will go to this candle I already told you right here. No.
Some tiny fella is here. So hold on, I'm going on mute. 1 second. Yeah. Okay, and we are targeting something 125 ADR, so around 100 pips, okay? 41 something. Yeah. SL you can take 40. around 123.30 because it's too big of an SL. If I even go on 15, then can you reduce it? No, we can't reduce it. So let me do, okay, last 15 low we can take. So last 15 low is take SL at 24. Send this into on this board. Sandy paper vessel, right? Yeah. And 41, I am targeting 41.1. That's it. Not more. Maybe 41.2 also is fine, but yeah. Only concern is if it's a fake card, then I'll try to release my risk, okay? This. Yeah. By the way, Glenn, we got a risk it for the biscuit, you know. If this goes as per our plan, this will cover up this BTC potential loss on BTC. We're still in the game, but we are in drawdown. Uh, would be the first loss. Yeah, anyway, that they have to come and they have to come sooner or later. Like, they didn't even take it down, so if you have to send this. He's What is the target 3750 if it happens? But 3749 so it will then it will take it. उसके बाद we can target it from there. Okay. Yes. 3750. Only question Like I is, would suggest taking partials at 125% ADR and then leave it open maybe. yeah, let it move a bit. We'll release as a very fast, so not that part. So uh, this 5 minute trade would have given to one by now, but again, this didn't beat the entire criteria, so we didn't take it.
Now this we do a breakout, the volume is nice, we take this trade, SL is the last 15-minute candle, and then we're targeting 37.50, and then but we have ADR at 37.41 something, 125% ADR. So that is That where, is 41.4. Yeah. so that is where we'll uh, do some action, like taking some Yes. position out or. But same thing, I'll manage this very aggressively right here. If we get some 30, 40 pip reaction, I'll move SL to break even anyway. Okay. Okay. So Yeah. that's gold so far. Let's see how it goes. It will be a long stream there. Okay, do one thing. I gotta take a break, so I have to do something this again. So I'll We leave my will pause stream. it actually. I'll leave my stream open and I'll going on. I'll pick up again in 5-10 minutes. I'll go Yeah. on. Okay. Yeah. Yeah. Sure.
Okay. I think we almost got 25 to 30 pips. 25 pips, yeah. I would be booking partials over here at 30, 30 pips. And leave the rest up until 141.2, where the ADX is also there, 125% ADX. हेलो हाँ ब्रो मैं लग गया हूँ तो इन केस अपना So you can move move your SL to entry also and take partials, because it's almost end of the day. Volume is kind of not too much. If you want to hold it, you can hold it for 100 pips, but I am taking partials and Manoj itself will be taking partials and moving SL to entry.
So 40 pips in total. Good catch. Good breakout trade. If anybody who has not taken partials, please do take partials and move your SL to break even as well. Hello, hello. Yeah, I can hear you. Okay, brother. So we finally have a move, and we are 40 running. pips. We are running 50 pips now. Well, 37, 50 37. pips now, yeah. Okay, so the same thing. I have to move ISL to entry just in case. And by right now, I'm closing half. Okay. So let me and this and leaving the rest. To no, Telegram I updated actually. Oh, you have the power to update on Telegram? That's simple. That's that. Yeah, yeah. Telegram and Discord I have updated. But don't then you can do that. Can you open Telegram on your piece? Hmm. Okay, dude, then okay, Yes. then I'll send a chart from tomorrow and you can rethink. Somehow when I Okay. try to look and ask me Yeah, a password, then I don't have that password. I don't know what it is, so I forgot. yeah. No, no, I'll do it. Okay, so we'll reduce the entry to SL. So first of all, let me mark it down. That was a breakout trade. So first update the stats. Okay, I get it. Mm, So 17th trade we have Boldies on Monday. See, again, we do the ISNL, the trade, we could get buy, and the trade we took at what time? 2042? No, we took on this on 30, right? We took on 30.
So we took this trade at exactly at 8 o'clock. Oh, sorry, 9 o'clock. 9 o'clock. Yeah. Okay, so that would be 2100. Trade was based on 30-minute breakout, and we do have a breakout. We took entry on the last candle flip. That is fine. So we have a breakout. Yeah, simple breakout with volume. Okay. That's Wow. a win. Whatever. Almost 60 pips. Oh, we are almost running. Yeah, we're running almost. Yeah, you said 60, right? So I Yeah. took partial at 50, and we followed the plan with yes. I think this will reach the target of 100 pips. What about the BTC? BTC did scare me a bit, but right now I'm still in the game, so as long as it moves, we're fine. And okay. BTC is still at our entry, right? No, we didn't go down maybe 200-300 points. That's it. We got 30, the SL wasn't. And I do put some sensitivities over right here. Again, one second, guys, I have to go on some. Are you mute on OBS? I'm back now. I do have again the tiny trouble. And Okay, okay.
So if we remove the BTC from here, we do have a how much 16 trade streak, 100% right? 16 trade streak. That's fine. But I was thinking that why wouldn't we enter on this trade? I already explained, but same story. We would have entered. Range was just right here. We could have stopped. This was a nice unknown territory. We did shoot up, so Yeah, then we we become captured all time. We bought at all time high and captured another all time high. again. So I become more choosy. But if something don't click, okay, leave it. We don't want to, uh, Makes sense. stick to those things. And this is the not first time we are missing some trade. We'll miss a lot. We missed the lot before. We can miss a lot again. So that is what it is. So bro, we are break even. We leave the runner already. I close half. I maybe close a bit more over here, but let's. Okay, I already open. Maybe let me close. I close 80% or no? Let's just close 30, 70%. Okay, so I close 0.10 more. Done. And still Euro USD still running, so that is also fine. These are I did not even check Euro USD. okay, brother. I think we could end the stream now. It's enough, or maybe you can wait for the TP to hit 13 months of it. Well, it's I think we can end this game. almost there, almost there. 30 more people and we're good to go. Yeah, 30 like this 35 might actually take another 1 hour considering the time we are in. Yeah, but okay, enough for today. That's done. I'll start stream tomorrow a bit early, maybe 11:30 my time. Just that the Frankfurt Open. So because today was a little bit late. And dude, I think it's Oh, it. I had an entry at it. My 15-minute order block entry is still valid actually. It never hit my SL. I ended a 15-minute order block right earlier at 3715.5. Yeah, if that only order I do Intel phone 15, right? But how I did. But I just wanted this Oh no, that scalp. I just checked it right now. My entry is still running. So yeah, that is good, good. Like I'm running around 200 pips. I don't know, it came down. So I entered right here, around something 15 something. When it tapped to his hourly order block. And then I was okay, tapped, more reaction, it coming down. Okay, let's enter from the half and it started put up. And then in this first candle, I did close around 22 points. Then it came down again. You'll be in trouble. Okay, damage too much. And then we do everything. See the reaction. Where did it tap? It went in 39. Okay. We got solid 70 pips. That is fine. So I think that is enough for today. And I'll start tomorrow's stream bit early. So that is it. Yeah, And yeah. I'll try to be early actually. no, I'll it try is. sleeping You, early you today. can do your thing, and then whenever you wake up, maybe 8. That is fine. No need to rush. I don't want to like I did wake up early, but I was just too tired to actually get up. Okay. Okay, done. So finally, let me close Okay. this one.